Hello everyone. As you all know that we are following a series of within 15 minutes for solving RET or any entrance test related to the entrance of PhD, है ना? So nowadays we are giving the focus on BHU RET 2019. This would be the part first of this video in which we will try to cover 50 questions. No further explanation. If you want the explanation for the options, then you would have to share your demand in the through the mail ID which is given in the description in this video. Let us talk about the first question, as it is the time to discuss the first question here. So the first 40 question is related to the research methodology. So the first question is probability sampling is otherwise known as random sampling. The next question here is a research proposal is a formal statement of what? A research process. Which of the following is not covered under intellectual property right? Copyright, patent, both are in. Trademark also comes in that. Thesaurus. A few of people would have to know what is the means of thesaurus. So इसका अर्थ होता है डिक्शंस या कलेक्शन ऑफ डिक्शंस, यानी कि डिक्शंस बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि शब्द संग्रह, है ना? शब्द संग्रह पे किसी का आईपीआर नहीं होता है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. बार चार्ट और ग्राफ विच शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ each value of the variable which is being analyzed is termed as what? It is being termed as histogram. The depth of research can be judged by what? The depth of research can be judged by the objectives of research. Let's talk about the next here, which is the mean of a set score is 50. Okay. The standard deviation is 10. Okay. Mean 50 है. Deviation SD जो है वो 10 है. If the score of each student is double, then the new mean will be gonna be double. ठीक है? Which of the following is not a type of research question? Hypothesis एक research question नहीं होती है. Developing good practice ठीक है. Evaluating a phenomena ठीक है. और predicting an outcome ठीक है. इस पर based research question बनाए जा सकते हैं. But hypothesis it is also another thing. ठीक है. With the concept of जैसे कि research question का concept होता है ना, वैसे ही हाइपोथेसिस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. खैर आगे बात करते हैं. आपको पता होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एक्सेप्ट व्हाट. सो किसके थ्रू, मतलब रैंडम सैम्पलिंग को छोड़ दिया जाए तो ये जो बाकी तीन आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑल आर कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज हियर एज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डजंट यूज व्हाट? अ रिसर्च डजंट यूज द फैक्टोरियल एनालिसिस. Let us talk the next value. The next question related to the p value stands for probability value. ये तो छोटा सा क्वेश्चन था. बात करते हैं in the process of next question है in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by what? So it is followed by the selection of research tool, longitudinal studies of cohort groups. So it would be what? It would be the use different participants for each sequenced measurements. ठीक है, मतलब हर एक sequential measurement के लिए different participants का यूज अगर करते हैं तो वो longitudinal study का कौन सा ग्रुप हो जाएगा? मतलब कोहर्ट ग्रुप हो जाएगा. यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में यही होता है ना कि डिफरेंट ग्रुप्स हम फॉलो अप करते हैं और एक अलग अलग समय के लिए करते हैं. ठीक है. खैर बात ये इन डेप्थ में हम बाद में समझेंगे किसी दिन. 13 क्वेश्चन देखते हैं. डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेटाडाटा. Metadata is the data that describes the other data.
Randomization is done to what? Randomization is done to reduce the biasness. Data is represented in the form of notes, recordings and videotapes. It is qualitative research. Grounded theory is often used in formulation of what? Grounded theory is often used in the formulation of policies and program evaluation research. Okay, now it is time to discuss about both the statement. The statement A is saying, favoring that variables can be manipulated, controlled and observed by the experimenter. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. Variables are not related to theoretical concept. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, so I think it would not be correct. मतलब statement B would not good या not correct, यानी not true, and it is correct. यानी कि A is yes, A is true but B is false. ठीक है. Let us talk about the next question. Which of the following is not a category of legal research? Parasitic discipline of law is not a legal research. Let us talk about the next question, which is about rejection of null hypothesis when it is true. It is type 1 error. In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation, such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So it is nominal. Let us talk about the next question, which is about the SE. SE is what? ST of a sampling distribution of a statistic. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which of the following is helpful in determining the sample size? So Cochrane's formula के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना एक चीज है कि ये जो रसेल इंडेक्स, टुसाट्स फार्मूला और स्पीयरमैन फार्मूला है ना, ये पॉपुलेशन कैलकुलेशन से संबंधित है ही नहीं. ऑल दीज आर नॉट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन कैलकुलेशन फार्मूला एक्सेप्ट दिस वन. यानी कि यही एक फार्मूला है जो रिलेटेड है पॉपुलेशन कैलकुलेशन से, बाकी और नहीं है. ठीक है, इसकी भी बात करेंगे बाद में एक्सप्लेनेशन में. खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केस स्टडी मेथड? केस स्टडी मेथड में क्या सही है? तो ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर. एक मिनट, हाँ, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो क्वांटिटेटिव नहीं होता, मतलब इट इज मेनली क्वालिटेटिव. बहुत सही है. और देयर आर मेनी चेंजेस मेकिंग एरर्स. ठीक है. इट इज एन एक्सपेंसिव रिसर्च. ठीक है. केस स्टडी एक एक्सपेंसिव रिसर्च हो जाती है. डाटा कलेक्शन में कभी कभी कुछ अच्छी चीजें हमें कलेक्ट करनी पड़ती हैं और वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है ना. और चेंजेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वक्त बदलने पर थोड़ा सा बदल जाते हैं और वो एरर को शो करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टडी में एरर आ जाता है. ठीक. और ये क्वालिटेटिव होती है, ये बात भी सही है. ठीक है. चलिए बात करते हैं आगे की. फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट बी की बात आती है, ए और बी की. Latin square design has an advantage over randomized block design because it is possible to control the effects of two secondary variables. And the next one is here, a 2 by 2 by 2 factorial design has 6 independent variables. तो फिर से वही बात है कि A सही है लेकिन B सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम 2 2 4 और 2 करके 6 नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब 6 वेरिएबल हैं इसमें. ये गलत बात है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग टीचर्स एटीट्यूड towards year-round schooling. She is particularly interested in describing the attitude of teachers from small, medium and large school. Which sampling procedure should be used by her to ensure her representative of these type of schools? So straty-wide random sampling इसको करना चाहिए. खैर, which of the following type of research focuses on amending the prevailing situations? एक्शन रिसर्च है, अमेंड करती है जो करंट सिचुएशन है उसको सुधारने के लिए, या जो त्वरित स्थिति है उस त्वरित स्थिति पर सुधार करके जो संकेंद्रित होती है, सुधार के लिए संकेंद्रित होती है, वह कौन सी रिसर्च है? केवल एक्शन रिसर्च क्विक रिजल्ट देती है. आगे की बात करते हैं.
if there are 8 categories or classes in a goodness of fit test, what will be the degree of freedom? So क्या कह रहा है, if there are 8 categories, अच्छा 8 categories है या classes in a goodness of fit test में 8 आ रहा है, so what will be the degree of freedom? ये 8 है, 8 minus 1 यानी n minus 1 होता है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज हियर एज क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा अंडर मोर व्हाट सिचुएशन या विच सिचुएशन, अंडर मोर न्यूट्रल सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन, सॉरी, है ना। फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फेवरिंग दैट अ केस स्टडी कैन बी यूज्ड ओनली इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है क्या? The approach of case study is based on artificial atmosphere। अच्छा भैया देखो, ये बहुत भारी सा स्टेटमेंट है, वही सही है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। What type of research focus on what will be? ऐसी कौन सी रिसर्च का टाइप है जो what will be पर फोकस करता है? एक्सपेरिमेंटल है ये, आखिर अगर ऐसा करके देखें तो क्या होता है या क्या होगा, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32nd क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग, sample frame would be the correct answer. What is research design? Research design is a framework for every stage of collection and analysis of data. If a study is reliable, this means what? This means the measures devised for concepts are stable on different occasions. Let us talk about the next one is ethical norms in research does not involve guidelines for which of the following. So thesis format is not, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस? एनर्जी, सीधी सी बात है, इज नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड cannot be represented in the quantitative terms. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। which of the following is not a citation style? शिकागो तो है, ओहियो is not any referencing style. Which of the following is not a defining characteristics of non-doctrinal research? It is organized around legal principles and appellate court decisions. It would not be correct. Which of the following is not true about positivism? पॉजिटिविज्म के बारे में क्या सही नहीं है? सो इट इज अ मेथड यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए बात करते हैं 10 क्वेश्चन अपने मेन कंटेंट वाले पेपर की यानी एजुकेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड? सुपर ईगो। हु टॉक्ड अबाउट द collective unconscious in the theory of personality? Carl Jung used to talk about it. Persona according to Carl Jung is what? So persona is animal urge, है ना। Mastery goal, a student who is mastery goal oriented will not be motivated to what? Will not be motivated stay ahead of other students. सारे विद्यार्थियों से आगे रहने में वो कभी भी इच्छुक नहीं होता है जो मास्टरी हासिल करने में इच्छुक होता है। ठीक। The goal of a person to become self-actualized is emphasized by humanists. A mind that found itself, it is an autobiography, is related to what? Related to with, and what nahi? Related with mental health and hygiene. The term life space was proposed by whom? Kurt Lewin gave this, है ना। The concept of learning web was given by Ivan Illich, who termed education as the midwife of democracy. John Dewey, लोकतंत्र की धाय में कहा है। अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर चला गया। हाँ, who among the following first saw the major function of education as the transmission of society norms and values? So एमाइल दुर्खाइम जो है, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के प्रमुख कार्यों को सामाजिक मानकों एवं मूल्यों के हस्तांतरण के रूप में देखा था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।